गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा आज का वीडियो है उसका जो सो कॉल्ड टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। तो चलिए गाइस, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जीन कोडिंग सेगमेंट ऑफ द DNA that makes that more rRNA, tRNA, mRNA that makes protein further. सो गाइज, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जीन का डेफिनेशन देख लिए और फिर जेनेटिक्स का भी डेफिनेशन हमने देख लिया है एक क्लियर कट। अब आइए हम देखते हैं कि किसने ये जो टर्म था जीन, ये किसने दिया था। तो ये दिया था जोहानसन ने कब 1909 में। अब गाइज हम देखेंगे व्हाट आर अलील्स। अलील्स आर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स। और अगर गाइज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, सो हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल यू कैन सी। दैट इज हाइट, दैट इज टॉल ड्वार्फ, आई कलर ब्लू ब्लैक ब्राउन। सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब होता है सेम, जैसे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स, इट वॉज गिवन बाय मेंडल। उनकी जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने नोट कर रखा। Gregor Johann Mendel, that is 1822 to 1884. He was an Austrian monk. He had great interest in hybrid digestion in plant. He noticed certain contrasting characters in garden sweet pea, that is Pisum sativum, plant in the garden of the church. He performed experiment for about 7 years. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इन्होंने 7 साल तक किया था। तो चलिए हम देखते हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजिस्ट यूज्ड इन हेरिडिटी। दैट इज फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? एक्चुअली ये फैक्टर और कुछ नहीं, ये जीन ही है। वो मेंडल ने जीन को डिस्क्राइब करने के लिए फैक्टर यूज किया था। आइए देखते हैं फैक्टर क्या है। दैट इज फिजिकल डिस्क्रीट डेफिनाइट स्टेबल बॉडीज दैट कैरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। और हम अगर पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, दैट इज एलील और एलिलोमॉर्फ्स। ये क्या होते हैं? ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। हाँ, अगर हम पॉइंट नंबर 3 देखिए, दैट इज होमोजाइगस, यानी कि प्योर ब्रीडिंग, एन इंडिविजुअल इन विच बोथ द फैक्टर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर आर सिमिलर। एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। गाइस, ये हमारा नेक्स्ट पेज है, दैट इज हेटेरोजाइगस। देखिए हेटेरोजाइगस मतलब होता है अलग अलग, दैट इज हाइब्रिड, एन इंडिविजुअल इन विच 2 फैक्टर्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर आर डिसिमिलर। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। If I talk about the dominant allele, in a heterozygous condition, the allele which express itself morphologically, it is, for example, tallness. If I talk about point number 6, that is recessive allele. In heterozygous condition, the allele which does not express itself physically and remain unexpressed. 7, genotype, that is genetic constitution of an individual for any character due to which it expresses itself, called genotype, that is TT. Is capital T, small t. Phenotype, the morphological expression of any character of an individual, that is tallness, dwarfness, red flower। guys, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा। if we'll see about monohybrid cross, a cross between 2 individuals having one pair of contrasting trait produce all the hybrid heterozygous, that is capital T, small t. If we will cross them, we will get capital T, small t, that is hybrid tall. That is all the plants are tall. Mono means one, that is one pair of contrasting, here it is used. If I talk about dihybrid cross, a cross between 2 individuals having 2 pair of contrasting traits producing a generation in which all individuals are heterozygous for both the characters, that is capital Y, capital R, small y, small r. So the hybrid will be capital Y, capital R, small r, that is yellow and brown. So here it is F1 generation, that is first female generation. The first hybrid generation produced in the monohybrid or dihybrid cross, etc. F2 generation produced on selfing the F1 individual. Monohybrid ratio, that is 3:1, the kind of ratio obtained by crossing for one single trait.
Dihybrid ratio, that is 9:3:3:1, the kind of ratio obtained by crossing for both two traits. सो गाइज इस पेज में मैंने कैरेक्टर्स लिख रखा है, और जो 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने यूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है. दैट इज़ सीड कलर, सीड शेप, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट. गाइज ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से. Mendel postulated 3 laws of inheritance. That is law number 1, law of dominance. It states that in heterozygous condition, out of the two contrasting alleles, one expresses itself morphologically and the other remains unexpressed. The factor which expresses itself phenotypically in the presence of its contrasting allele is called dominant, and other which remain unexpressed is called recessive. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं गाइज, एक हमने लिया है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी. इनका जो गैमेट है उनको हमने फ्यूज़ कराया है, और जो हमें मिला वो मिला हमें हाइब्रिड. दैट इज़ ऑल, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Law number 2, that is law of segregation. It states that two factors controlling one character separate or segregate without blending out each other during the formation of the gamete, so that each gamete receives one factor from each of the character. It means gametes are always pure, hence it is also known as law of purity of gametes. Here, parents, that is male and female. Phenotype, that is pure tall and pure dwarf. And if we'll talk about the genotype of pure tall, it will be capital T, and genotype of pure dwarf, it will be small t. If we will talk about gamete at the F1 generation, that is capital T, small t, and if we will do selfing, we will get the ratio 1:2:1. सो गाइज हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है. होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी.